News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic on Money Matters is computation of income tax under the head of salary. You can send your queries regarding this topic, computation of income tax under salary, on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में आज का विषय है वेतन से होने वाली आय पर कर की गणना। आज इस विषय पर जानकारी देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पहली आज हम जैसा बता चुके हैं कि विषय है वेतन से होने वाली आय पर इनकम टैक्स का हिसाब लगाते समय उसमें क्या क्या शामिल करते हैं और क्या क्या शामिल नहीं करते हैं, इस पर हम क्या क्या छूट ले सकते हैं और क्या जो कभी एरियर या बकाया राशि वसूल होती है उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है, ये सारी चर्चा करेंगे डॉक्टर यामिनी अग्रवाल से। तो पहले शुरू करते हैं यामिनी इस बात से कि वेतन किसे कहेंगे हम, वेतन से होने वाली आय उसमें क्या शामिल है? सेक्शन 17 इनकम टैक्स का सैलरी डिफाइन करता है और जहां पे भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होती है या मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप होती है और वहां से कोई भी एक्रूवल्स होते हैं या रिसीट्स होती हैं, उन्हें हम सैलरी के टर्म में लेते हैं। आपकी वेजेस, एन्युटी, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, एडवांस सैलरी का या कोई और पेमेंट आपको रिसीव हुआ हो लीव के प्रति या फिर कोई भी एनुअल एक्रेशंस हुए हों उस रिलेशनशिप के थ्रू या आपके प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जमा हुआ हो, इस सभी को आप एक सैलरी का पार्ट मानते हैं। What about the role of pension also? Because once you superannuate, then you are also get the benefit of receiving pension based on your contributions earlier. Pensions is also a part of your salary. So it is also included as part of the salary and is computed under the head of the salaries when you receive it on a monthly basis. यामिनी, आपने अलाउंसेस की बात की थी, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? जी, जब आप अलाउंसेस की बात करते हैं तो अलाउंसेस आर फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द सैलरी विच आर पेड टू दी बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब कोई जो है पीरियोडिक पेमेंट्स आपको दी जाएं, उन्हें अलाउंसेस कहते हैं। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है या कोई और एंटरटेनमेंट अलाउंस हो सकता है या कोई और अलाउंस हो सकता है। We also have tax slabs or tax brackets whereby income tax is computed, and there are 4 of them. From up to 2.5 lakhs, there is no income tax charge, and beyond that, the tax rate goes up from 5% to 20% and 30%, and that would cover quite a sizable portion of our working population. The working population also demands that while the government gives them concessions regarding the payment of taxes to be as reduced as possible, there are also other instruments by which you can seek exemption from paying income tax. So, if your income is above 10 lakhs, there is also news about how you can invest in tax-saving instruments like mutual funds, and your tax savings can be as much as 50,000 rupees. What are the other means by which you can save on taxes? And do explain to our listeners once again what the tax brackets are. So when we talk about income tax, you are actually paying taxes on the total income that you receive. So you have to compute your income from all the different sources, which includes income from salaries, income from house property, income under capital gains, income from business and profession, and income from other sources. There are different deductions which are given in the different sources. After you have computed your gross income from the different heads, you avail the deductions which are given in these heads, and then
then when you arrive at your total income, from that particular total income, from 80C to 80U, you are given a different set of deductions. One of the important deductions in that particular case is 80C, whereby in that particular case, you can, when you make investments in different saving plans, right from the contributions you make for your provident funds, or in the new pension scheme, or in the mutual funds, or in the life insurance policies, or in mutual funds, you can claim a deduction of 1,50,000. You can claim an additional deduction of 50,000 if you make an additional contribution to the new pension scheme, the NPS that is there. So similarly, when we talk about exemptions and deductions, the basic difference between exemption and deduction is that an exempted income is not included in the income itself. However, when we talk about deductions, first the income is included in the computation of the income, and then the deduction or the removal of that particular income takes place. So the difference, very basic difference is that. Now, in the salaries, when we are actually computing salaries, you have a salary which you would compute as to what are the different components, right? Your DRS allowance, your basic pay, and the other aspects that are included in the salary. Then you have allowances which you will have to calculate, and then you have perquisites. There are exempted allowances, and there are exemptions which are given in the perquisites also. So the portion that is then eligible for the computation of the income, the gross salary is taken out from there, and then from there you actually deduct the standard deduction under section 16, the entertainment allowance, and the professional tax, and then you get income under the head of salaries. Similarly, different other heads have the different computations which are there. After that, when you're supposed to pay your taxes, the taxes are paid on the basis of the particular rates which are applicable on the different slabs. So up to 2,50,000, there is no tax supposed to be paid, and then after that there is a slab of there is a new scheme and there is an old scheme, and based upon the old and the new scheme, there are different slabs at which different rates are there. If you opt for a new scheme, there are 70 exemptions and deductions which you cannot avail, which includes the standard deduction, LTC, HRA, and the others. Whereas in the previous scheme, which was the old scheme, if you continue to use it, there are different deductions based upon the exemptions which are available on it. You can then avail the exemptions and then pay the tax. Also looking at the scheme of the Income Tax Act when it comes to salary, do you see the direct tax code coming into the picture in this financial year or the next when the income tax is assessed? Well, it is difficult to suggest that whether the direct tax code would be applicable or would be allowed this year or next year. However, there is continuous work going on in terms of the simplification of the taxation. The first stand which the government has taken is to actually introduce a tax system of a lower tax rate without the exemptions and deductions, which has been a work done by the institutes, by many of the institutes, with respect to how exemptions and deductions take away the taxability of the government at higher levels of incomes. चलिए हम फिर से मुख्य विषय पर लौटते हैं कि वेतन से होने वाली आय पर कर की गणना में क्या क्या शामिल है और क्या नहीं है। आपने कहा कि पेंशन उसमें शामिल है, लेकिन शायद फैमिली पेंशन उसमें शामिल नहीं है। जी, जब आपको पेंशन मिलेगी उसमें हम कम्यूटेड एंड नॉट कम्यूटेड पेंशन होते हैं। जो कम्यूटेड पेंशन है, जो मंथली आपको पेंशन मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वो एग्जेम्प्टेड होती है। और लेकिन जब आप उनकी बात करते हैं जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर उन्हें ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 ऑफ द पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो 1/2 ऑफ द पेंशन जो है एग्जेम्प्टेड होती है। जहां तक फैमिली पेंशन की बात है, क्योंकि वो अदर सोर्सेज में आती है, उसको इंक्लूड किया जाता है और उसके अंदर जो है आपको सैलरी आपको उसके अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलती। अच्छा, इसमें एक और है, आपने ग्रेच्युटी की बात की, पीएफ पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि उसे हम शामिल करते हैं नहीं करते हैं? जी, प्रोविडेंट फंड को हम आपके जो कंट्रीब्यूशन है उसे आप जो है डिडक्शंस के अंदर अलाउ करते हैं, और वो जो सैलरी है उसके अंदर पहले इंक्लूड किया जाता है और फिर उसको डिडक्शन दी जाती है सेक्शन 80C के अंदर।
You mentioned about the difference between exemption and deduction. What about exception to the tax slab? Is there a separate meaning of that, or does it bear the same meaning as exemption? Exception to the particular income tax. For instance, your house property, when you sell it, there's a capital gains to be made. If it's a holding period of, say, 24 months, then you are exempted from capital gains. Is the word exemption to be read as exception? Because we find this usage of the word, but it's not always easily clarified by the accountant if you're seeking advice or from an expert. When you look at the word exemption, which has been used in the Income Tax Act at different places, it usually indicates that given this is the particular order which will be followed in the normal circumstances. However, in certain circumstances, it would be otherwise stated, and that is what the exception usually states for. अच्छा, जैसे वो जीवन बीमा की जो विभिन्न योजनाएं, अगर टर्म इंश्योरेंस को छोड़ दें हम, तो काफी सारी हैं जो मनी बैक है और उस तरह की, जिससे कुछ समय के बाद कुछ आय होती है. क्या उन्हें भी सैलरीड लोगों के वो इनकम में शामिल किया जाता है? जी, जब आप लाइफ इंश्योरेंस से सम अश्योर्ड आपको मिलता है तो वो या कोई बोनसेस मिलते हैं, वो आपके इंक्लूड नहीं होते. Also, when you come to the computation of income tax for those who are earning a salary, these are individuals that we're talking about. Does it also include the Hindu undivided family? Is there salary from that, or an association of persons or body of individuals? We are talking about salaries with respect to the individuals. Even in Hindu undivided families or the others, there are incomes which can be received as a part of the salaries from the different employees which are there. The salary component has to be identified as an employee and an employer relationship that is there. Also, you spoke about the importance of the individual. Are we talking about resident individual or non-resident individual, and how is the tax treatment to these two categories? When we talk about resident or non-resident individuals, we refer to the taxability of the income on the basis of what accrues in India or what is received in India. So whatever accrues in India and is received in India is taxable in the hands of the resident Indian and in the hands of the non-resident Indian. But for a non-resident Indian, if it accrues and is received outside India, it is not taxable in India. यामिनी, और दो तीन चीजें हैं जिन पे अगर हमें थोड़ी और जानकारी मिल जाए तो अच्छा रहेगा. एक है, जैसे पहले आपने जिक्र किया है, HRA है, हाउस रेंट अलाउंस है, फिक्स्ड मेडिकल के लिए जो मिलती है राशि वो है, और एक कन्वेंस है. तो आई मीन इन तीन चीजों पर क्या कौन सी चीजें शामिल हैं, टैक्सेबिलिटी क्या है उस पर? जी, अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, जैसे सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज होता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस होता है, और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं. अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो ये एग्जेम्प्ट होता है टैक्स में अगर उसमें से कोई भी तीन श्रेणी में आना चाहिए. पहला, 50% आपकी सैलरी हो जो दिल्ली, मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप रह रहे हो. अगर वो नहीं है तो अगर 40% ऑफ दी सैलरी हो अगर आप और कहीं रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई या और कहीं जगह पे, या जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, या फिर कोई भी आप रेंट के 10% अपनी सैलरी से ऊपर रेंट जो पे कर रहे हैं, उन तीनों श्रेणियों में से जो भी सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्प्टेड होता है हाउस रेंट अलाउंस में. ऐसे ही डिफरेंट अलाउंसेस में डिफरेंट एग्जेम्पशन लिमिट्स दे रखी होती है. उनका जो पर्टिकुलर एग्जेम्पशन लेवल है वो डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर लिमिट से. अगर आप उस लिमिट को लेते हैं तभी वो एग्जेम्प्टेड मानी जाती है. You just spoke about exemption up to 2.5 lakhs. If that is your gross income, then there's no tax payable. But if income is above 2.5 lakhs for the entire financial year and assessment year, then when is the right time to pay the income tax directly to the government, because the direct tax after all? So there must be a last date by which salaried individuals have to pay. Is that in the July to August period? Of course, the government does announce it specifically. It's about 31st of July. So at that time, they are supposed to be, all returns are supposed to be filed.
sometimes a leverage is given whereby the government actually allows the individuals to fill their returns and submit it after a particular date, but usually it is till 31st of July. And you're listening to our discussion on the topic Computation of Income Tax under Salary with our expert, Dr. Yamini, on the program Money Matters, which is being run on News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID, moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेतन से होने वाली आय पर कर की गणना, और हम श्रोताओं को याद दिला दें कि कल इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य बीमा के गंभीर रोगों से संबंधित योजना पर चर्चा होगी। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर यामिनी, इस पर आप अभी बात कर रही थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, क्या ये फैमिली पेंशन से होने वाली आय जो है असेसमेंट ईयर जो अभी है 19-20 का, उस पर भी ये लागू होता है? जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपकी मिलेगी सैलरीज में से, वो 50,000 की आपको मिलेगी, और वो आपकी एप्लीकेबल है ओवरऑल टोटल ग्रॉस सैलरी में से। Dr. Yamini, you spoke about investments under Section 80C. Now, if you are a latecomer to the investment cycle, then how does one file the returns and yet at the same time enjoy the deductions available under the Income Tax Act? From 1st April to 31st of March, you can actually make the investments any time in the year, and that can be claimed in the assessment year. So you have an entire period of 1 year to make these particular investments for the next year. In case you have not made it, then you cannot claim the deduction from 80C. Also, you have investment proofs that you have to submit. So when you make an application, how quickly is a proof given to you on the basis of the payment that you made in investment? Usually, if you're, let's say, making an investment in an LIC policy, the policy would be there or the premium payment receipt is there. Similarly, when you have the investments made in PPF, or you have investments made in any other particular instrument which is allowed for this particular deduction, you usually have the payment proofs that are there, or the statement proofs that are available to you, which can be used for your income tax purposes. One does not have to submit it when the ITRs are filled. However, when the assessment arises, then one may be required to show it to the income tax official. यामिनी, कुछ और बातें हैं इससे संबंधित कि वेतन से होने वाली आय, चूंकि ये बहुत निश्चित है और इसमें गणना में शायद इतनी परेशानी नहीं है जितनी व्यापार से संबंधित या प्रोफेशनल लोगों के लिए जो आय है उससे संबंधित जो कानून है, क्योंकि इसमें आपके नफा नुकसान का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, जैसे एक अक्सर जो समस्या आती है, खास करके जो नई नौकरी शुरू कर रहे होते हैं लोग, उसमें हमेशा होता है कि एम्प्लॉयर ने तो टैक्स काटा नहीं, मैं फंस गया अंत में। जी, आप शायद टीडीएस की बात कर रहे हैं, जो काटना होता है हर एक एम्प्लॉयर को जब वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर नहीं काटता तो उनके ऊपर पेनल्टीज हैं अब, पर एम्प्लॉयर्स यूजुअली टीडीएस काटते हैं जो उन्हें सबमिट करना होता है, जिसके लिए वो रिटर्न जनरेट करते हैं और जिसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है जो उन्हें एम्प्लॉय को देना होता है आखिर में। Dr. Yamini, if an individual wishes to pay income tax and they are made to pay income tax because that's what the law prescribes, you have 3 categories on the basis of age groups. One, you have under 60 years, then you have over 60 years, and then you have under 80 years or 80 years and above. Now, is that under the old scheme or is it also under the progressive system? The progressive system basically indicates that there are slabs on which the particular rates would be implemented, and accordingly it is a method whereby higher incomes would be taxed at a higher rate. Under the new system, the slab rates are lowered, as well as the deductions and the exemptions have been removed. The senior citizens and the super senior citizens have been given extra benefits in many of the exemptions. Including higher pensions also. Including higher pensions and deductions or interests which are then eligible to them. So there are, let's say, the different exemptions and deductions in which they are eligible to a higher benefit than the others. यामिनी, अभी आप कुछ देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे कि
टीडीएस की बात है कि अगर एम्प्लॉयर ने काटा है, नहीं काटा है, या फिर और भी है, ये जानकारी पेंशन जो हमें जो पेंशनर्स को सीधे बैंक अकाउंट से मिलती है, क्या उन्हें भी फॉर्म 16 की जरूरत होती है, और वो फॉर्म 16 कौन जारी करेगा? जी, जो फॉर्म 16 है वो बैंक देता है, और वो फॉर्म 16 सबमिट करने के लिए आपको ये डिटेल देनी होती है कि आपकी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स है, और आपकी जो अमाउंट है वो बैंक टीडीएस ना डिडक्ट करें, क्योंकि आपकी इतनी टैक्सेबिलिटी नहीं बैठती है. Based upon your interest in tax saving instruments, what is your recommendation to our listeners? Should they go into mutual funds? And again, there are types of mutual funds which give you tax benefits based on whether they are debt mutual funds or they are equity mutual funds. And what is your holding capacity? How long can you hold on to these kind of investments? What would you advise, or would you advise investments in other instruments? There are different schemes which are there available in the market, as you just correctly suggested. With respect to mutual funds, there are 36 categories of mutual funds in which a person can invest. Even specific schemes like retirement plans and children education plans are there, where investments can be made through the SIP mode, which is a systematic investment plan, which can help create investments and also simultaneously take benefit. If you keep your money even on savings deposit, you get a deduction of up to 10,000 rupees on the interest that you receive from the savings deposit. So there are certain benefits which are received from different investment components. The overall deduction which is available on savings is 1,50,000. An additional sum if you invest in the national pension scheme is about 50,000, which makes the total deduction to be 2 lakhs. Dr. Yamini, apart from compensation in cash, which is typically the case for anyone who is an employee under the employer-employee relationship that you spoke about, and there's of course the master-servant relationship as well, there's also compensation in kind. So you receive cash and you also receive shareholding in the company, for instance. So how is that taxed? So when you talk about ESOPs when you receive, you don't have, they are calculated on these are referred to as perquisites which you have, and there are perquisites which have valuations which need to be done, and based upon those valuations they are taxed. So when you talk about allowances, or when you talk about perquisites, they are received to a person other than the salary, which includes basic pay and DNS allowance. So these particular different kinds of components of the salary are taxed based upon the different exemption limits or which are given over there. So every perquisite is measured in terms of their valuation, which is officially identified and then added to the salary and then taxed accordingly. डॉक्टर यामिनी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी वेतन से होने वाली आय पर कर की गणना से संबंधित, लेकिन कुछ जो बिल्कुल मोटी बुनियादी बातें हैं, क्या आप उनको दोहराना चाहेंगे? हमारे पास समय अब थोड़ा सा बचा है. जी, सैलरीज के अंदर जब भी कंप्यूटेशन होती है तो बेसिक सैलरी आपकी इंक्लूड होती है, डीएनएस अलाउंस होता है, या आपको कोई भी और सैलरी मिल रही हो जो एम्प्लॉयर आपको दे रहे हो अलाउंसेस या परक्विजिट्स के माध्यम से. जो भी अलाउंसेस अलाउड हैं वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक अलाउड हैं. कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस पर मंथ के हिसाब से अलाउड हैं, कुछ स्पेसिफिक अलाउंस कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स के हिसाब से अलाउड हैं आपकी सैलरी के परसेंटेज के बेसिस पे. उन एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के बाद उन्हें आपकी सैलरी में इंक्लूड किया जाता है. ऐसे ही परक्विजिट्स बहुत सारे दिए जा सकते हैं जिसमें जितना ऑफिशियल पोर्शन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है. जो नॉन ऑफिशियल पोर्शन होता है या आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करते हैं उन्हें टैक्सेबल माना जाता है. इस परक्विजिट्स का बेसिक कंसिडरेशन ये रखी जाती है और उनको इंक्लूड करके टोटल ग्रॉस सैलरी निकाली जाती है. फिर उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की जाती है जो 50,000 तक की है. फिर आपके एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो वो अलाउ किया जाता है, जिसकी भी 3 लिमिट है, जिससे भी कम होता है. उसके बाद आपकी अगर आप प्रोफेशनल टैक्स देते हैं वो भी माना जाता है. चलिए, डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी. कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Tomorrow's topic on Money Matters is Critical Illness Plan. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.